Hello children, Meenakshi Sinha is here from Maths Gyan. Question related with trigonometry for class 10th, exercise 8.4, question number 5th, third portion of 5th question, that is from NCERT approved book. Tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is to be equal to 1 upon 1 plus sec theta into cosec theta. This is to be proved. So इसके लिए first of all we know that cos is related, sec is related with cos. Sec is related with cos, है ना? 1 upon sec is equal to cos and cosec is related with 1 upon sin. ये थोड़ा दिमाग में आता है. तो why don't we use sin and cos in place of tan and cot? Tan and cot की जगह sin and cos अगर इस्तेमाल करें then we can do it very easily. So first of all हम क्या करेंगे? Everything is to be converted into sin and cos. Okay. tan को क्या लिख सकते हैं? sin theta upon cos theta. Correct? Upon 1 minus cot को क्या लिखेंगे? cos theta upon sin theta. Correct? यहाँ तक सबको पता है. Everything is known to everyone. Now from here, cot theta can be written as cos of theta upon sin theta upon 1 minus sin theta into cos theta. Correct? Correct. अब ऊपर वाले एलसीएम लीजिए, ये इसको नीचे वाले को एलसीएम लीजिए तो 1 sin theta minus cos theta, sin theta will get upward. यहाँ पे लेंगे cos theta, एलसीएम लेंगे तो cos theta minus sin theta upon cos theta will go upward. So that will get here sin theta upon इसको cos theta ऐसे लिखा हमने into इसको sin theta minus cos theta into cos theta into sin theta. सॉरी, देखिए यहाँ का एलसीएम लिया sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस थीटा, ये sin थीटा ऊपर चला गया, इस sin का ही cos नीचे आ गया. सिमिलरली हियर cos थीटा ऐसे रहा, sin थीटा डाउनवर्ड, इसका sin थीटा, cos थीटा अपवर्ड, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sin थीटा लिख दिया. Now in denominator we are having what? Within bracket 1 by sin theta, it can be written cos theta, LCM taken here, minus sin theta, and this cos theta gone upward. Okay, here we'll get here sin square theta upon cos theta into sin theta minus cos theta. Okay, here we are having cos theta minus sin theta, so that we can change the sign and can write here cos square theta upon sin theta into sin theta minus cos theta. This is with minus. This get changed because of this. इनका रिप्लेसमेंट किया, cos के लिए sin, sin को cos, तो ये वाला sin माइनस में आ गया. इसको रिप्लेस कर दिया, sin को इधर लेके आए, cos को उधर ले आए, तो ये वाला इसका माइनस साइन कर उसको माइनस ले लिया. नाउ एलसीएम लीजिए जी, इस पूरे का फिर से एलसीएम लीजिए. एलसीएम लेंगे तो आएगा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा into sin theta. This will be the LCM. Okay, this is your sin theta cos theta is common and sin theta cos theta दोनों के LCM. इसको डिवाइड करेंगे, ये गया, ये बचा, this will get multiplied over here sin cube theta. Similarly sin theta भी ये वाला हट गया तो ये cos रह गया, cos इसके पास जाएगा minus cos cube theta. क्लियर? एलसीएम लिया,
ये इंटू ये कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा एलसीएम आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बिकॉज दिस इज कॉमन। जब एलसीएम लिया तो इसके बाद ये पूरा इसका छुप गया, ये साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज साइन क्यूब थीटा। इस केस में ये छुप गया, पूरा इसका नीचे इसके बराबर है, तो कॉस स्क्वायर और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। ओके, ठीक है। Now, यहाँ पे हमें we have to use the formula. This formula is to be used. We know that a cube minus b cube. This can be written as a minus b into a square plus b square plus ab. This formula should be known to you. क्या लिख सकते हैं इसको? फिर से साफ साफ लिख देंगे। एक बार फिर से लिखती हूँ, a cube minus b cube can be written as a minus b into a square plus b square plus ab. This is the formula. This can be written as this. In place of this, a is equal to a cube, we can write sin cube. In b cube, we can write cos cube theta, and formula will get converted in this form. A means sin theta, b means cos theta, sin theta minus cos theta into sin square theta plus cos square theta plus a sin theta into cos theta. Okay, this will be the value in numerator, and denominator will remain same, cos theta into sin theta minus cos theta into sin theta. This will remain same. Now this is equal to 1. This is equal to 1. It can be written as 1. And it get cancelled. This sin theta cos theta get cancelled. This sin theta and this sin theta get cancelled. So we will get here 1 plus sin theta into cos theta upon cos theta into sin theta. Okay, cos theta into sin theta. cos साफ से लिख देती हूँ। Now इसको बाइफर कीजिए। This will be 1 upon cos theta into sin theta plus sin theta cos theta upon cos theta plus 1. This is nothing. 1 upon cos theta is equal to what? 1 upon sec theta. It means it can be written as sec theta. 1 upon sin theta is cos sec theta plus 1. This is proved. Okay, this gets proved. Enjoy the maths. Don't worry about the trigonometry. It is a puzzle type questions. You have to use the puzzle. This is replacement of the terms from here to there. Okay, thank you. Good night. Enjoy the maths. Thank you. Good night. Don't forget to like me, subscribe me, and share me. Okay, good night.